Rahim to go with the celiac trunk. Celiac trunk is the artery to foregut. Foregut includes abdominal esophagus, abdominal part of esophagus, then the stomach, and then duodenum up to the opening of major duodenal papilla in the bile duct in the duodenum second part, and also the derivative liver, gallbladder, and pancreas. These are all the derivatives of foregut. Celiac trunk arises from the abdominal aorta at the level of T12. It gives three major branches. First one is the left gastric artery, second one is the splenic artery, and third one is the common hepatic artery. It is 1.25 centimeter in length. Celiac trunk is 1.25 centimeter in length. Then to go with the relation of the celiac trunk, we have it is surrounded by the plexus of nerve. Celiac plexus of nerve is related to the celiac trunk. Anteriorly, it is related to the lesser sac and lesser omentum. Lesser omentum is the peritoneal relation that joins the lesser curvatures of stomach and duodenum to the liver at porta hepatis and ligamentum venosum. To the left, it is related to the crus of diaphragm, and at the right side there is right crus of diaphragm. This is the celiac trunk, and this is actually the diaphragm with the crus. Aortic opening is actually not the true opening. It is surrounded by the right and the left crus. So the celiac trunk relation are right side toward the right crus, and at the left side there is left crus of diaphragm. Then there are celiac trunks at right and left side. Right side there is right celiac ganglion, and left side there is left celiac ganglion. And the last thing toward the right side is the caudate lobe of liver, which is located nearby porta hepatis, and to the left side is the fundus of the stomach. It's not fundus, it's the cardiac end of the stomach related to the celiac trunk left side. Inferiorly, celiac trunk is related to the body of the pancreas and also the splenic vein. That can't be viewed here because of the pancreas. It is behind the pancreas to the spleen. Then we can move toward the branches of the celiac trunk. The first branch is the left gastric artery. Left gastric artery moves upward and toward the left side. This is the left side where the stomach is located, and it moves toward upward and toward the left side up till the cardiac end, where it reaches the cardiac end of the stomach. It enters the lesser omentum, and move along the lesser curvature of the stomach. There it gives the esophageal branches, which supplies the esophagus, and some gastric branches which supply the stomach. Then go with the second branch of the celiac trunk, which is common hepatic artery. Common hepatic artery moves toward the right side of the body and reaches the free margin of the lesser omentum, where it gives a proper hepatic artery. The lesser omentum, right free margin of lesser omentum contain hepatic artery proper, bile duct, and portal vein. The hepatic artery has the relation. It lies on the portal vein, and towards the right side of proper hepatic artery there is bile duct, or we can say this vice versa. Bile duct has a proper hepatic artery at its left side. So we can find the common hepatic artery. फर्स्ट ब्रांच तो होगी हमारे पास प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी. प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी विल एंड इन द लिवर बाय गिविंग राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरीज, and then it will give rise to common hepatic artery will give rise to some other arteries. First one is the gastroduodenal artery. The gastroduodenal artery arises, move behind the first part of duodenum. There is an important relation I can describe later. Then it reaches the lower end of the first part of duodenum and give rise to right gastroepiploic artery, which move
along the greater curvature and anastomose with the superior left gastroepiploic artery and supplies the greater curvature of the stomach. And the second branch is the superior pancreatico-duodenal artery. Superior pancreatico-duodenal artery gives supplies to the pancreas, and along with it there is inferior pancreatico-duodenal artery, which is the branch of superior mesenteric artery. तो यहाँ तक अगर हम स्टोरी रिवाइज करें तो ये हमारे पास कॉमन हिपैटिक आर्टरी है, जो कि आगे जाके हमारे पास प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी में चेंज हो जाएगी और एक ब्रांच देगी गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी. गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट के पीछे से मूव जब करेगी तो ये हमारे पास राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी देगी और हमारे पास सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी देगी ये वाली. अब ये जो हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के पीछे से मूव करे. जब हमारे पास पेप्टिक अल्सर होगा ना तो वो हमारे पास इरोड करेगा और उसकी वजह से उसके जब कंटेंट्स पीछे की तरफ लीक आउट करेंगे, वो मोस्टली पोस्टीरियर साइड पे होता है, वो पीछे की तरफ जब लीक आउट करेंगे तो ये इसके पीछे बिल्कुल पड़ी हुई है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी. अब गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी की वॉल डिस्टर्ब होंगी, वहाँ से ब्लड जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर आना शुरू हो जाएगा, ड्यूडिनम के अंदर, वहाँ से ब्लड में, वहाँ से स्टमक में और स्टमक से आउट ऑफ द ओरल कैविटी थ्रू द वॉमिटिंग. और इसको हम कहेंगे हेमाटोमेसिस, यानी कि पेप्टिक अल्सर जब होगा तो हमारे पास हेमाटोमेसिस होगी ड्यू टू गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी. Then there is a cystic artery. Cystic artery supplies. Cystic artery is the branch of right hepatic, I think so. It supplies the gallbladder. The proper hepatic artery gives rise to the right gastric artery. Right gastric artery moves toward left and move along the lesser curvature anastomose with the left gastric artery and supplies the lesser curvature. Lesser curvature पे हमारे पास दो आर्टरीज आ रही हैं. लेफ्ट गैस्ट्रिक जो कि डायरेक्ट ब्रांच है सीलिएक ट्रंक की, और राइट गैस्ट्रिक जो कि ब्रांच है प्रॉपर हिपैटिक की, जो कि ब्रांच है कॉमन हिपैटिक की, जो कि ब्रांच है सीलिएक ट्रंक की. यानी कि एट द एंड सीलिएक ट्रंक से लेफ्ट गैस्ट्रिक निकल रही है, सीलिएक ट्रंक से हमारे पास कॉमन हिपैटिक, प्रॉपर हिपैटिक, और वहाँ से निकल रही है राइट गैस्ट्रिक. ये आगे लेसर कर्वेचर पे. अब बाकी आर्टरी कहाँ से आ रही है? एक आ रही है गैस्ट्रोएपिप्लोइक. गैस्ट्रोएपिप्लोइक जो राइट वाली है वो आ रही है हमारे पास यहीं से कॉमन हिपैटिक की एक ब्रांच गैस्ट्रोड्यूडिनल है. गैस्ट्रोड्यूडिनल की आगे ब्रांच आ रही है गैस्ट्रोएपिप्लोइक राइट वाली. अब लेफ्ट वाली कहाँ से आ रही है? आगे हमारे पास थर्ड ब्रांच है इसकी स्प्लीनिक आर्टरी. स्प्लीनिक आर्टरी जब मूव करती है तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा टॉर्चुअस आर्टरी है. यहाँ पे पड़ा हुआ है पैंक्रियास का अपर बॉर्डर. ये अपर बॉर्डर के साथ पैंक्रियास के रन करती है, वहाँ पे ये पैंक्रियास को ब्रांचेस देती है. फिर ये स्प्लीन की तरफ जाती है, स्प्लीन को ब्रांचेस देती है. फिर ये हमारे पास स्टमक के इस साइड पे आके हमारे पास ब्रांचेस देती है जिसको हम शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज कहते हैं, वो भी स्टमक के फंडस को सप्लाई करती हैं. उसके बाद हमारे पास जो है ना ये एक ब्रांच देती है लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक. नीचे से आ रही है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, ऊपर से आ रही है लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक. दे विल कनेक्ट एनास्टोमोस एंड सप्लाइज द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक.